Chalo, I think we are on the game, Nishtha, and we'll just wait for the confirmation from few students. Guys, if you can listen to me properly, please tell me that everything is all okay. We are live and we can go ahead starting this. Chalo, Nishtha, I guess 99% we are live, and let's go ahead. Too good. I'll just skip the and we both are live. Madam, congratulations. Thank you, sir. इतना ठंडा सा thank you. And I heard that you are from Guwahati, and Guwahati means there is a special dance for thank you. What do you say about that? Thank you, sir. Too good, बेटा. तो क्या किया तुमने रिजल्ट आया तो what is the first thing that you did? Tell me that first. So I did not see my marks, like individual subject marks and group total for one and a half, 1.5 hour. I was just taking calls, and then everyone around me were crying. My mom, my sister, they were crying, and I was just on calls. And but I I just sat for 2 minutes. As soon as I got a call from the president, I just sat for 2 minutes, and it was just accepting and acknowledging that this has happened now. And then all I was just, I had informed my teachers, and everyone was so happy. My family members, we were just jumping around, and they're just walking continuously. It's very anxious, but at the same moment, very happy also. Very happy. I can seriously imagine that moment. Nishta, I'll tell you what we did this time. As you know that you all guys are very anxious about the result. So I started Yes. getting messages right from the day before at night, and they said, "Sir, अभी Zoom call चालू कर दो because वैसे ही हमें रात को नींद नहीं आने वाली है." तो आई सेड बेटा ठीक है, मतलब इतना एंशियस नहीं, मैं भी इतना एंशियस होता हूँ, तो आज सो जाते हैं, कल सुबह मिलेंगे, पक्का मिलेंगे. I have my final class in morning 7 to 9. So Nishta, welcome to CA final, okay? And let me tell you Thank you. कि अब आप क्लासेस रोज सुबह 7 से 9 या 7 से 10 अटेंड करोगे. अब आपके पास वो लिबर्टी नहीं होगी कि आप क्लास दोपहर को अटेंड कर लो या शाम को अटेंड कर लो. Since you will start your articleship, the only free time that I can catch you or you can catch me is going to be in morning. So I take my lecture 7 to 9. बेटा जैसे 9 बज गए, बच्चों के मैसेज, सर रिजल्ट आया नहीं, कब आएगा, सर आप जूम तो चालू कर दो, हमें आपसे बात करनी है. एंड यू नो एक्सीडेंटली इट वाज लाइक आई थॉट कि चलो 10 बजे चालू करेंगे, बट आई वाज फ्री, तो मैंने 9:30 को जूम चालू किया. जैसे ही मैंने 9:30 को जूम चालू किया, देयर वाज रिजल्ट्स. एंड इट वाज सो फन निष्ठा कि सम ऑफ द पीपल आर रियली जंपिंग. और हमारा जूम कॉल था, दे वर लाइक 400 किड्स इन दैट. आई कुड नॉट रियलाइज कौन क्या कर रहा है. थोड़े लोग चिल्ला रहे हैं, मतलब मुझे बताओ कौन है, क्या कर रहे हो तुम. तो आई कैन सीरियसली इमेजिन द एनवायरमेंट एट योर हाउस बेटा, एंड द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट यू हैड, एंड दैट इज फैबुलस. आई गेस यू विल यू नो कभी भी फ्यूचर में कोई 2-3 साल के बाद भी तुझे ये पूछेगा ना, यू विल हैव योर टीयर्स ड्रॉइंग डाउन फॉर दिस डे, है ना. Yes, sir. Too good. Matter of pride, beta. Matter of pride of actually, it's a matter of pride when you clear both the groups together, and when you clear with such amazing results. It's like AIR 2, and it's fabulous. Seriously, a Thank matter of pride. Um, Too good, यार. मैं पहले रिजल्ट दिखा दूँ तेरा, if you don't mind, Yes. है ना, Yes, sir. कि इनको पता चले कि AIR 2 का रिजल्ट होता कैसे है. So Nishta, this is your result, and I'm so happy to look at your results. You have scored 95 in accounting, 67 in corporate laws, and you have scored 87, 88 in costing, 83 in taxation. Oh, ma'am, you are like fabulous. Advanced accounting में you have 93, auditing and assurance में you have 83, EISSM में you have 70, financial management में you have 79. This is so very fabulous, so very fabulous. मेरे को टाइम लग रहा है इसको ड्रिल डाउन करने के लिए. पता नहीं तू कह रही है कि तुझे 2 मिनट लगे. मुझे ये रिजल्ट्स को देख के आई एम गेटिंग गूज बम्स, एंड मुझे लग रहा है कि मुझे 5-10 मिनट लग जाएंगे. अब मिनट में. सो मैम, दिस इज वेरी फैबुलस, वेरी फैबुलस. अपना तेरे को सारे सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स है, बट ऐसे होता है ना कभी कि वी हैव सम फेवरेट्स. एंड एक और चीज दिखा दूं मैं इन लोगों को. इज योर रिजल्ट विच सेज दैट यू हैव स्कोर्ड AIR 2. मेरे पास ये भी चीज है ना. So Nishta, just give me a minute once again, and this tells me that you are AIR 2. This is so much cool. This is your name.
Proud for that. Registration number, total marks, and this says that you are AIR too. यार निष्ठा, before they give you some sort of award or this or that ना, फिलहाल तो इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने घर के बाहर लगा दे यार इसको. This is fabulous. Nishtha, did you have any favorite subjects or something like that? Yes, accountancy has always been my favorite because I Account used to find it. तू Yes, sir. इसीलिए तो नहीं बोल रही ना, बिकॉज आई टीच अकाउंट्स इन इंटर, इसीलिए तो नहीं बोल रही है तू. No, 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 sir. So since 11 only, it was my favorite. It has been my favorite subject, and tax also. I find it extremely interesting. At the same time, it was difficult for me, but it was very interesting. But what is so great about it that you scored such a good marks in tax this time when the people are scoring very less in tax. So this time the ICI has been very tough with taxation paper ka checking and something, and you are fabulous. Accountancy and advanced accounting both are equally favorite. So it's the same. Like accounts, the basic is same. The chapters are different, and the method of doing the questions are different, but the base is same. So There's nothing none different. of like I can't choose between No them. advanced, no accounts and no advanced accounts. So initially, I'll tell you, Nishtha, there were no two accounts. Okay, there was only one account. So after the portion changed, what they did is there's a whole book of 600 pages. So they did 300 pages accounts and 300 pages advanced accounts. So there's actually one accounts, not two accounts. But this is fabulous, fabulous. Too good. Nishtha, tell me a little bit about from foundation to inter, your journey in your words. Okay. So I gave my class 12th in the year 2019. So the immediate term which I could have given was November 19. But since I was shifting to a new place, I thought of adjusting to the place. And also, honestly, I hadn't decided at that point of time if I wanted to pursue CA. Then November 19, I thought that let's start with CA for once. Let me just, attempt the first level, which is foundation, and then I'll see if I want to pursue it or not. And also, in my family, my father was also pursuing CA, and my sister was also doing, and many members in my family were doing it. So I thought, ki, let me also try it. And also, I've heard that in the commerce field, like CA is the supremest profession. So I thought that let me try if I could, crack it. So I registered and I was about to give the exams in May 2020, but obviously it was the COVID term, so it got cancelled. So my syllabus was completed till March, April, and May also I was studying, but then it was getting deferred till from May to June, then August, and then it was cancelled only. So I thought it's enough. I was so exhausted that I thought that I'd start with directly with inter accounts. I was so bored. Also, I was not allowed to go out. So I thought let me start with a group one accounts of intermediate. So in the month of July only, July 2020, I started with accounts until August or September first week. I completed my first group one account syllabus. Then again, I started with foundation revision, and then I appeared for the exams in December 20. And then from January 21, 4th January 21, I started with other subjects of inter. So then I was about to give the exams in December 21, but I was not like after 15th of November, I was not good. Like my health was not good and I was not able to write for a few days. So I thought that all my efforts would be wasted if I won't be able to clear in one attempt or group reh jayega ya kuch ho jayega. So I thought that I defer the term and then I sat for the exams in May 22. Now, this is so amazing, absolutely amazing. So you have shifted from Guwahati to Calcutta, right? For Yes. matlab doing the CA or adjusting to the new place, basically. Yeah. So, any logical difference you found in that place from Guwahati to Calcutta? People were very helpful to you in Calcutta. Yeah, people were helpful, but they were different from my friends in Guwahati. So initially, I had a hard time, but then when I came back to Guwahati, I was missing Calcutta. I was missing my college. When I was there, I was every time living, I want to go back to Guwahati. My friends are my friends are different. I want to go back to them, or my family is here. But when I came back to Guwahati, I was like, Kolkata was nice. Chalo, great, great, great. Yeah. Amazing. Beta, just keep on doing whatever you're doing. You're doing fabulous. Are we exactly clear with that one? And just before we started the lecture, I will just repeat those terms in front of all the people and the viewers that you are entering a different ball game altogether. So you have cleared your inter. That's one step in CA now. And definitely there's another big step that is known as final. I seriously hope कि
whenever your first attempt comes, and after that attempt you and me are again discussing the same things here. What's it? And everything Yes, sir. repeats again and again, you know. So this time you'll have not 1.5 hours of call. This time, let's say you have like 5 hours of calls, including the president of ICI, including me as an educator with an academy, and congratulating all that. निष्ठा, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अब Yes. मेरे स्टूडेंट्स को तुम स्पेसिफिकली, हम इंटर की बातें करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब मुझे ये पूछा करते हैं कि सर हमें दोनों ग्रुप्स देना चाहिए कि एक ग्रुप। तो मैंने एक चीज़ तो तुमसे ये गैदर किया है आज कि तुमने एक अटेम्प्ट डिफर कर दिया जब तुम कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो मैं अपने बच्चों को ऑल द टाइम यही बोलता रहता हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो भागना नहीं है, पर कोई शॉर्टकट्स नहीं लेना है। यू नो, आजकल का एक एडवेंट गेम है ना, थोड़ा क्रैश कोर्स लेके खत्म कर देते, थोड़ा ये खत्म कर देते। तो आई कैन सी वन थिंग इन यू इज यू डिड नॉट अप्लाई एनी शॉर्टकट्स। यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड फ्रेम कि अपने को फुल जाना है, फिर अटेम्प्ट देना है। आपको कुछ कहना है बेटा इस बारे में, आप बताइए। So, my decision was कि should I get good marks in CA or pass in one go, or should I waste 6 months? So I had to make a choice कि एक बार दिसंबर में ट्राई भी कर सकते थे एग्जाम देके, because my syllabus was completed, but the last 15 days 20 days के जो preparations थे वो मेरे अच्छे से नहीं हुए थे. So that was a difficult decision, but I was regretting it after the exams. Like when I saw the question papers of the December term, I was like I could have cleared it, but now that I got such good marks in the me attempt, I am no more regretting it. ठीक है। सो व्हाट वाज योर नॉर्मल डे बेटा? अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो व्हाट इज योर नॉर्मल डे? कभी उठते हो, कब पढ़ाई करते हो, कब क्या करते हो, व्हाट इज योर थिंग्स? So I am an early bird. So during the classes, like from January 2021, I made it a point that I'll wake up at 5 a.m. and I used to do one subject. Like I used to do tax because firstly I found it very interesting, and secondly the teacher was also teaching in a very funny and very humorous way. So I did not feel like sleeping also listening to him. So first slot was 5 to 7:30. 8 o'clock was for one class, and then I used to take a not a break, like 1 hour break to get ready and fresh and have breakfast, and then for good 1.5 hour I used to do self study because already my accounts was completed in the last year only. So I thought of revising it, or studying something which needed revision before the classes. Then 11 say 1:30 tak I had one more class, and then from 2:30 to 5 o'clock I used to do another class. So per day I used to do 3 class till 5 p.m. or maximum 6 p.m. and then 2-3 hours were for my self study. So I did not just rush through the classes कि एक दिन में 4-5 classes कर लेते, because I had sufficient time. I always used to stay near the books, but I made it a point कि दिन में 3 से ज्यादा classes मेरे को नहीं करने थे, मेरे को साथ में self study भी लेके चलना था. So this was the routine till my classes were going on till August. And then when I started full on self study, then I used to wake up at 6:30, and फिर targets होते थे कि इतने दिन में इतना करना है, 4 days में I have to completely revise the syllabus. तो ऐसे करके करते. और रात को कितने बजे सोते थे? Sir, 10 o'clock, like 9:30, 10 maximum I used to leave my books and phone also. या 10:30 तक maximum phone भी छोड़ देती थी, and I used to just relax and calm my mind, and I used to sleep. And afternoon any short nap, खाने के बाद कोई रेस्ट, कोई रिलैक्सेशन, ऐसा कुछ? रेगुलर नहीं था, बट समटाइम्स अगर पढ़ते पढ़ते आ जाता तो 15 minutes पावर नैप, बट ऐसा पॉइंट नहीं था कि रोज मेरे को सोना ही है दोपहर को. दिस इज सो गुड. आई एम एन अर्ली बर्ड माई सेल्फ, बट आई गेस हम लोग दोनों ना आउट ऑफ द ट्रेंड है, ठीक है? आजकल का ट्रेंड अर्ली बर्ड्स का नहीं है. तो मेरे को तो मेरे बच्चे हंसते, मेरे को बोलते हैं आप बूढ़े हो गए हो, आप इस जमाने के नहीं हो, ये अर्ली बर्ड कौन उठता है? So I'm very happy that you are a next gen and you are joining that 5 a.m. club. That's what we call it as, joining the 5 a.m. club. Yeah. ये लोग मेरे को बोलते 5 बजे उठ के थोड़ी क्या करते हो आप, हम तो 5 बजे सोते हैं. तो I really don't understand, but fabulous, ठीक है? So I can just jot down your timing a little bit and I can understand आप 10 बजे सो रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, तो you are absolutely taking that 7 to 8 hours of sleep, which is absolutely necessary. इन लोग को क्या लगता है पता है, ये AIR1 AIR2 वाले लोग सर 2-3 घंटा सोते होंगे. मैं बोल बोल के थक जाता हूँ यार इनको. थोड़े लोग तो बोलते हैं सर मैं 5 घंटा ही सोता हूँ, मैं 6 घंटा ही सोता हूँ. मैं क्यों ऐसा कर रहे हो यार? यू स्लीप प्रॉपर्ली, यू नीड अ प्रॉपर स्लीप. सो दिस इज फैबुलस. एंड तुम्हारे स्लॉट्स जैसे मैंने अभी सुने ना, तो यू आर एक्चुअली ऑप्टिमाइजिंग इट टू 10 hours ऑफ स्टडी मैक्सिमम इन अ डे. दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग एट एक्चुअली. बट आई गेस आप जब भी स्टडी करते होंगे तो फोकस आपका कुछ अलग ही होगा, है ना? Yes, sir. Very good. Madam, are you there on social media?
So I am there. I was very active, but exams, like whenever I feel like I'm going out of control, so I used to completely deactivate my accounts. So like from February to May 30th, my account was deactivated कौन because से I could not अकाउंट्स? control my. वेरी गुड, कौन से So अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए, कौन से सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए? mostly I used to be very active on Instagram, so I deactivated it. And Snapchat also, I मतलब दिन में 10-15 minutes, जब snap आते, मतलब notifications तो ऑफ ही थे सबके, तो कभी अगर पढ़ाई के बीच में 5-10 minutes देख लेने का मन करता था, बट देन आई रियलाइज कि स्नैप में भी इतना कुछ पता चलता है कि माइंड में वही चलते रहता है, तो देन आई रिमूव स्नैपचैट ऑल्सो, एंड फेसबुक तो यूज नहीं करती थी, तो चलो, सो मैडम इज यूजिंग द सोशल मीडिया, बट इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक कि उसे डिलीट कर दो अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो। यस ठीक है मैम, एक और चीज़ डेवलप कर लो, ठीक है? अब डिलीट नहीं करना, बट यू नीड टू ग्रो टू दैट लेवल ऑफ मेच्योरिटी कि जब हमें चाहिए तब हम ऑन कर ले, जब हमें चाहिए तब ऑफ कर ले, ठीक है? सो वो लेवल यस की एक मेच्योरिटी लेके आएंगे आप अभी, है ना? बिकॉज येस, यस अगेन लॉट ऑफ पीपल अगेन थिंक कि टीवी नहीं देखना है, स्नैपचैट नहीं करना है, इंस्टा नहीं करना है, बट इससे तो मेरे को लगता है कि दुनिया एकदम ऑफ सी हो जाती है। दैट्स व्हाट आई फील पर्सनली, कि हम लोग अपना टच बेस ही छोड़ देते सारा। तो दैट इज गुड, बट उससे प्रेशर नहीं आता है। एनी प्रेशर्स दैट यू फेस निष्ठा? ऐसा कुछ था कि निष्ठा क्या कर रहे हो, कुछ तो करना ही है यार, ऐसा कुछ? Actually, after 12, all my batch mates were giving the exam in November 19. So मैं 6 months already late थी. फिर मेरे May attempt भी defer हो गए. तो 6 months और cancel. तो 1 साल में late हो गई. उसके बाद मैंने December में exams नहीं दिए. तो 1.5 year I am after like behind my batchmates. तो कभी कभी ऐसे कोई बोल देता था, बट आई नेवर बॉदर माई सेल्फ विद दैट. इनिशियली मेरे को लगता था कि यार शिट, नवंबर 19 में दे देती तो अभी तक तो एकदम कहाँ पहुंच जाती, बट आई जस्ट स्टॉप्ड इट. मतलब कंपैरिजन, आई डिडंट कंपेयर. सब बोलते थे तो थोड़ा मेरे को ऐसे लगता था कि थोड़ी लेट हो गई हूँ, आई एम 22 नाउ, तो सब मेरे से बहुत आगे है, बट नाउ इट डज नॉट मैटर एट ऑल. It does मतलब not matter. एवरीवन They are मैसेज. going to follow you. It seriously does not matter. They will follow you now. They will say, Nishta is our friend. यू विल नॉट या बिलीव, यू विल नॉट बिलीव मी बेटा। आपके रिजल्ट के एक आध वीक पहले, 2 वीक पहले फाइनल का रिजल्ट आया, ठीक है? तो जस्ट बिफोर आई स्टार्टेड योर इंटरव्यू ना, देयर वे कपल ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझे घर पे मिलने आए थे, उनका सीए फाइनल कंप्लीट हो गया, दे बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो उसमें से एक मेरे को कहता है, बोला आर यू हैप्पी? हाँ सर हैप्पी तो हूँ, पर थोड़ा एक चीज़ से सैड हूँ। मतलब कौन सी चीज़ से सैड है बेटा तू? तो बोलता है सर मेरे को ना 2 अटेम्प्ट लग गए फाइनल क्लियर। मतलब पागल, तू सीए बन चुका है, यू नो? सो ही इज लाइक, मेरे फ्रेंड्स ना सर मेरे 6 महीने पहले सीए बन गए, मैं अभी सीए बना। मतलब सीए बनना जरूरी है यार, ये कौन सी कंपैरिजन किए जा रहे हो तुम? तो इट वाज सो फन, मतलब एग्जैक्टली सेम वर्ड्स रिपीट कर रही है तू। नथिंग इज टू लेट अनलेस एंड अनटिल वी आर प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड, ठीक है? मैडम यू हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम नाउ, अप्रोक्सीमेटली 2.5 years, कि आपको आर्टिकलशिप करना है और अब आपको फाइनल की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? ऐसा कुछ दिमाग में है अभी फिलहाल कि कैसे जाने वाले हो, क्या करने वाले हो? सर अगस्त या मैक्सिमम सितंबर तक आई वांट टू स्टार्ट विद द फाइनल क्लासेस. आई डू नॉट वांट टू वेस्ट द इनिशियल 4-5 months व्हिच एवरीवन डज, कि थोड़ा रिलैक्स एंड जस्ट आर्टिकलशिप में ज्यादा कंसंट्रेट करो. तो दैट इज द प्लान. ठीक है, चलो गुड बेटा, आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट. आई वाज टॉकिंग टू यू बिफोर वी गॉट कनेक्टेड एंड आई एम अ फाइनल फैकल्टी, यू शुड बी नोइंग दैट. एंड बेटा कुछ भी काम हो, यू नो, यू कैन टेक माई नंबर्स फ्रॉम दिस अनअकैडमी पीपल एंड डायरेक्टली मैसेज शूट कर देना, यस सर, है ना? डेफिनेटली. यू हैव दैट प्रिविलेज। जैसे सेकंड रैंकर को कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कल मैंने इंटर वालों के यस. साथ, जिनका रिजल्ट थोड़ा पॉजिटिव नहीं आया था ना, आई वाज हैविंग अ जूम सेशन विद देम. सो आवर जूम सेशन कंटिन्यूड फॉर 4 hours. मैं कल 4 बजे से जूम सेशन लेके बैठा था, 7 साढ़े 7 बजे तक हम सिर्फ जूम पे बातें कर रहे थे. सो आई वाज टॉकिंग टू वन ऑन वन एक्चुअली। बहुत सारे इस टाइम का रिजल्ट थोड़ा स्ट्रिक्ट है ना बेटा, तो अपने लोग थोड़े जो मिस कर गए तो उनको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, है ना निष्ठा? निष्ठा, एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल? यस. और मैं तेको पहले बता चुका हूँ कि निष्ठा अब ना, आप सिर्फ निष्ठा नहीं रहे हो, आप एक सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहे हो, ठीक है? तो पीपल आर गोइंग टू फॉलो यू. मैं देखो एक सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ, ठीक है? आज तूने बता दिया ना कि तू 5 बजे उठती है, बहुत सारे लोग अपना ये यूट्यूब सेशन देख रहे हैं. मैं इनको बोलता था ना 5 बजे उठना, ये बहुत फर्क होता है. और आपने बोला ना कि आप 5 बजे उठते थे, तो देयर विल बी सम पीपल हु विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, ठीक है? अब मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि आज तेरे सेशन के पहले 2 बच्चे मुझे मिलने आए थे,
So they told me, sir, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग जिम में जाते हैं, all we do this is because you keep on motivating us. So निष्ठा, मैं ना, I'm a fitness freak, ठीक है. I always believe कि you cannot shut the doors and you have to be very fit and tight. So मैं कभी cycling, मेरे joggings, मेरे trackings, they are very very famous. I always tell CA people, एक चीज़ देखी जाती है कि CA इंटर से CA फाइनल, जब CA बन जाता है ना, लोग 25 kg वेट ऐड कर देते हैं. बिकॉज एक अलग बॉल गेम पे आ रहे हो, घर पे बैठना है, पढ़ाई करना है. अब घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करते करते क्या करते हो, चिप्स खाते हो, स्वीट्स खाते हो, बैठे रहते हो. सो आई ऑलवेज मोटिवेट देम, एंड देन आई रियलाइज व्हेन दिस पीपल कम एंड टेल मी ना कि सर आपसे मोटिवेट होकर हम कर रहे, तो वी ऑलवेज फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, कि हमें ये करना है. सो मैडम, आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ने वाले, आपके स्नैपचैट के फॉलोअर्स बढ़ने वाले, मैं भी आपको फॉलो करने वाला हूँ अभी. एंड मैं आपसे सिंपल सी एक चीज़ कहूँगा कि आप कीप ऑन मोटिवेटिंग पीपल, कीप ऑन लीडिंग, कीप ऑन सेटिंग द राइट एग्जाम्पल, है ना. तो आप बताओ अभी आपको जो भी बताना है. अब ये पूरा माइक आपके लिए, 2 मिनट के लिए, पूरा जो बोलना है आपको बोल सकते हो आप, बताओ. Firstly, congratulations to everyone who have cleared the intermediate exams and are now CA finalists. And for those who have not cleared, मैं उनको मतलब यही कहना चाहूंगी कि obviously at this point of time we only see on the negative side, but I think अब since the November exams are approaching, अब इसको एक positively लो. और अब तो अपने मिस्टेक्स अगर अभी तक पता चल ही गए होंगे कि हमने सैंपल बेसिस में पढ़ाई की थी या हमने ये किया था, इस पे फोकस नहीं किया था, तो स्टार्ट रेक्टिफाइंग द मिस्टेक्स. एंड नवंबर अटेम्प्ट इज कमिंग ओनली, सो अभी तो 200% लगा देना टू क्लियर द एग्जाम्स. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. कृष्णा, मैं देख लेता हूँ तेरे लिए तो एक 300 क्वेश्चंस है कि नहीं. ये कृष्णा पूछ रहा है, टू गुड. एक दिन में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ लेते थे मैडम? सर क्लासेस 3 सब्जेक्ट्स ही करती थी, और फिर जो बाकी सेल्फ स्टडी होता था वो एक्चुअली मूड पे डिपेंड होता था, या फिर जो क्लासेस होते अगर कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता था तो वही कर लेती थी. बट मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स क्लासेस के टाइम. और जब फर्स्ट रिविजन की तो फर्स्ट रिविजन एक्चुअली क्लासेस के साथ ही हो गई थी मेरे, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी साइमल्टेनियसली करती थी. उसके बाद आई मेड इट अ पॉइंट कि मेरे को 4 दिन में पूरा सब्जेक्ट एक बार रिवाइज करना है. तो 8 सब्जेक्ट्स 4 दिन करके मेरे 1 मंथ अप्रोक्स में फर्स्ट रिविजन हो गए थे. देन आई डिसाइडेड कि अब मेरे को 2.5 डेज में करना है. एंड देन आई अपीयर्ड फॉर मॉक टेस्ट, एंड साइमल्टेनियसली आई वाज अपीयरिंग फॉर मॉक टेस्ट आल्सो. सो आई वाज डूइंग दैट ताकि मैं नैरो डाउन कर सकूं कि मेरे को लास्ट 1.5 डे में क्या पढ़ना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो 1.5 डे ही मैटर करता है. तो I was just reducing the number of days that I require to complete one full revision of the entire subject. तो ऐसे मैं करती थी. And now the second question is, how many revisions you did per subject? ये सब बच्चे पूछ रहे हैं आपको बेटा, ठीक है? Yes sir. Two revisions, solid 2 revisions, and बीच में जो चैप्टर जो मेरे को ज्यादा डिफिकल्ट लगते थे या फिर जो सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट लगता था तो उसका करती रहती थी. Absolutely, absolutely. मैडम, EISSM एक बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है और एक ऑडिट बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है. तो मैम इन दोनों को तोड़ने का आपका कोई स्ट्रैटेजी? Yes, so since I knew कि these are almost मतलब पूरे theoretical subjects ही थे, मतलब although we studied in a practical manner थोड़े examples लेके, but at the end of the day when we have to write the answers, हमें एकदम we used to make it a point that we have to write book का answer or have the keywords in it. So what I did कि classes के साथ साथ I used to study audit and EISSM. EISSM was the last subject I took जुलाई में, जब तक मेरे almost सारे classes complete हो गए थे. जुलाई में मैं start की EISSM so that I could do 2 hours of classes, and at least 1 hour I could revise the same thing again at the same day. And before the next class, in the next day, I used to revise it again. Like I used to read it once again. So it's a simultaneous revision होता गया मेरा. And I appeared for mock test, and I used to underline the keywords. मतलब I used to try to ratify everything, but obviously it did not happen. Last में मेरे को बस वो keywords याद रहते थे. And I appeared for 3-4 mock tests of EISSM. And for audit, what I did was chapter wise, I used to make targets that chapter 1 मैं कर ली. अब मेरे को past year के सारे RTP, MTP, ICI back questions
सॉल्व करने हैं. इफ समथिंग अगर मेजरली अगर केस बेस्ड क्वेश्चंस आते तो आई यूज टू मेक इट अ पॉइंट दैट आई राइट द आंसर्स एंड देन आई कंपेयर्ड इट विद आईसीआई's आंसर, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग एंड हाउ दे राइट द आंसर्स. गुड मैम, कितने मॉक टेस्ट दिए थे? हाउ मेनी मॉक टेस्ट? सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के, बिकॉज आई हैड द एक्स्ट्रा टाइम, बिकॉज मेरे नवंबर 20 तक ही, नवंबर 21 तक सब कंप्लीट हो गए थे मेरे क्लासेस और रिविजन्स भी. तो आई हैड एक्स्ट्रा टाइम. तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के तो आई थिंक मैंने 5-6 मॉक टेस्ट दिए थे. बट फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक ईआईएसएम आई गेव 3 एंड लॉ एंड ऑडिट नॉट इन वन गो 3 आवर्स में मैं ऐसे बैठ के नहीं दी थी. बट I used to write the answers ki mock test mein, especially the two mock tests which the ICI publishes towards the end of the term. वो मैं दी थी. एंड टैक्स के लिए द टू मॉक टेस्ट जो आईसीआई निकालते थे, द आरटीपी दिसंबर पेपर एंड एक और शायद दी थी. तो 5-6. That's too good. So importance of test is very important. थोड़ी लोग तो एक भी मॉक टेस्ट नहीं देते और एग्जाम देने चले जाते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड अनलेस एंड अनटिल यू गिव द मॉक टेस्ट. कहाँ से होगा? मैडम मॉक टेस्ट देती थी, मैडम 5 से 6 मॉक टेस्ट देती थी और मैडम ने आईसीए के मॉक टेस्ट भी दिए थे. आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस आंसर. ऑलवेज राइट एंड प्रैक्टिस. दैट्स व्हाट मैडम इज सेइंग कि अगर कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी हो जाए तो प्लीज राइट एंड प्रैक्टिस. आर वी एग्जैक्टली क्लियर? 3 गोल्डन टिप्स फॉर रैंक इन सीए इंटर. आई विल गिव हर आंसर. मैडम मैं आंसर दे देता हूँ आपकी तरफ से, है ना? Wake up at 5 in the morning. क्या कहते हो? Wake up at 5 in the morning, guys. Give 3 mock tests, 5 mock tests at least, 3 mock tests minimum, ठीक है? और ऑडिट और ईआईएसएम जैसे मैम ने कहा ना, वैसे की राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है. मैम एक लास्ट क्वेश्चन, वरना ये लोग तो अपने को क्वेश्चन पूछते रहेंगे, तू और मैं थक जाएंगे, इनके क्वेश्चंस नहीं थकेंगे. बट बहुत फनी सा क्वेश्चन लगा, इसके लिए मैं ये क्वेश्चन पिकअप कर रहा हूँ. मैम एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने तक आपने क्या किया? एग्जाम 30th मई को कंप्लीट हुए. तो मेरे 3rd जून से 19 तक आईटी की ट्रेनिंग थी. फिर 20th से 6 तक ओटी की ट्रेनिंग थी. देन 7th को फाइनली आई वेंट टू राजस्थान. फिर मैं दिल्ली गई और दिल्ली में रिजल्ट्स आ गए. तो 1 मंथ तो मैंने ब्रेक नहीं लिया. आई हैड द कंटिन्यूअस ट्रेनिंग और उसके बाद आई वेंट फॉर वेकेशन. एंड वेकेशन राजस्थान में? Yeah, Rajasthan, my hometown, because my family was, everyone was there, and we had some, like, I'm a Jaini, so we have some, there is something going on in Rajasthan, like, we have something there, some event there. So I went there and then I went to Delhi. You are a Jain? Yes, sir. तो ये तुम फास्टिंग बहुत करते हो, मैंने सुना है. No, sir, मैं नहीं करती, sir. अच्छा. Only one day. Okay. One day in the year. Jains लोग बहुत फास्ट करते हैं, right? है ना? Yes, I guess you have that festival which is known as what? Paryoshan ऐसे कुछ कहते हैं. Yes, that only. I follow that only. और उसके end, the last day I have a fast. Okay. So एक दिन. Yes. I have lot of my students, ठीक है? Lot of my students who have done that. So I remember one of my student has done that 28. तो मैंने उसको पूछा था what is that, बोलता हम 8 दिन खाना नहीं खाते. बोला यार क्या कर लेते हो यार. So this is fabulous. Nishtha, बेटा, it was great talking to you, ठीक है? Thank you. You are a very humbled person. You are very straight to heart, you know. मतलब it's so great कि तुम कुछ सोच नहीं रहे हो, एकदम हार्ट टू हार्ट टॉक है तुम्हारा, डिस्कशन है. बेटा ऐसे ही रहना, ठीक है? एंड you know, you have lot of blessings from all of us and you have lot of support, mentorship from all of us, ठीक है? Use this all wisely. तो और इतना अच्छी तरह से यूज करो ना कि रैंक 2 इन इंटर एंड रैंक 1 इन फाइनल. So, I guess है ना, sorted है बेटा. क्या कहते हो? Yes, sir. Don't forget your aims and ambitions. Stay higher. Keep flying. I love you. Take care, guys. I'll end my interview with Madam. ठीक है? And this is what are your plans for articleship? She told us, Rishika, that she plans to do her articleship from top 4 and she wants to start from approximately August. And Madam, since AIR2 है, so she's already told me you've got calls from couple of big fours also, right? Yes, sir. मैडम बाकी के दोनों ने भी नहीं किया ना, तो मैं उनको फोन करके बोलता हूँ कि आज फोन कर ले आपको. ठीक है? Too good. Wonderful. Thank you, Nishtha. Thank you, beta. Take care. Love you. Thank you so much, sir. Thank you. It was great talking to you. Bye-bye. Thank you.